वेल हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर वाफियत होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर स्ट्रीम एंड काफ़ी दिन हो गए मुझे लाइव आए हुए एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट एक्चुअली मैं बीमार हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। और अब हम स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे विद अच्छी सेहत एंड विद इंथुजियाज़म। लेट्स स्टार्ट। और पिछली बार हम लोगों ने लेफ्ट ऑफ किया था कहाँ से? हम लोग इनपुट आउटपुट गार्ड प्लस पाइडेंटिक स्कीमा पढ़ रहे थे साथ में। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू explore some more places of the OpenAI agent SDK, and we are going to dive into some new things. Let's open our project. और हाँ, not to mention sorry, do not forget to mention the time. It is 6:22 a.m. in the morning. So yeah, if it's a.m., it's morning. Let me open the project. I guess it was in the G, and it was in the agentic AI, and it was in the OpenAI SDK 00. And I guess we are here. Let's open the project. On the other hand, let me check the stream if I am live. And I will definitely not forget to just mute myself because um, the voice gets doubled last time, and it was just in the last minute of the stream, so it won't be a problem. Okay, we are live, and let's see how far have we been consistent. So yes, it's only been a week and we went ill, so no problem. We will just cover up the stuff. Let's open the OpenAI agent SDK, OpenAI agent, and here we go. Here is the documentation. OpenAI agents Python. I guess we should also clone the repository of this. Let's go to the repository, open it in the new tab. I don't know if it will open in new tab. No, it won't. I knew it. OpenAI agents Python. And this is the repo. I am pretty sure I should clone this one. Looking for TypeScript and JavaScript version, you can download this one. I love TypeScript actually, and I'm quite proficient in writing in that language. But currently we have to learn Python also. So we have to be comfortable with that. So yeah, let me just clone this project also. We will come here and we will just clone the project here. I will write cmd. टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस करंट डायरेक्टरी के अंदर. ओके, आई होप कि हो जाए. देन गिट क्लोन एंड पेस्ट करो इसको. क्लोनिंग ओपन एआई एजेंट्स पाइथन. इससे हमें इसका स्ट्रक्चर जो है वो मालूम करने में ज़्यादा आसानी होगी कि कौन सी चीज़ कैसे बनी हुई है. मुझे स्पेशली एजेंट्स की क्लास के अंदर देखना था कि ये कैसे बनी हुई है. ओके डन. इतना इजी था भाई, हमारे पास हो गया काम. सो ओपन AI एजेंट पाइथन एंड वी हैव क्वाइट लॉट ऑफ फाइल्स हियर. तो इसको थोड़ी देर में खोलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए. बट फॉर नाउ वी विल कीप आवर फोकस ऑन वन थिंग, and that is OpenAI Agent SDK. So it is a short documentation and we must not take much time exploring this one because we are developers. And आज इसीलिए मैं सुबह सवेरे उठा हूँ ताकि मैं अपने पिछले जितने मेरे दिन रह गए थे उसका मैं वो करूँ, जुर्माना भर सकूँ. सो लेट मी सी कि हम एजेंट्स के अंदर है. बेसिक कॉन्फ़िगरेशन. द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एजेंट यू विल कॉन्फ़िगर आर इंस्ट्रक्शंस. ओके,
also known as developer message or system prompt. ठीक है, model, which LLM to use, and optional model settings to configure model tuning parameters like temperature, top P, etc. ओके, सो हमें पिछली बार जो थी क्यूरियोसिटी थी कि टॉप पी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। सो इसका अब हम अपने जीपीटी से पूछेंगे, चैट जीपीटी। ओके, एंड इससे हम सवाल करने वाले हैं, व्हाट आर द टर्म्स related to LLMs like top P, sorry मैं top 0 लिख गया, why, top P and temperature and other common words. Kindly educate me. Okay, so it is going to tell us about some of the common words used as, okay, ये क्या है, AKA nucleus sampling, मुझे नहीं पता था इसको ये बोलते। Okay, max tokens, frequency, present penalty. Okay, so we are going to learn quite some things now. और कुछ यहाँ पे है, tools that agent can use to achieve its task. Okay, before making an agent we will just learn कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और ये चैट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. Let's see. Okay, we are at 0 viewers, so we are alone. भूतों के साथ बातें कर रहे हैं हम इस टाइम, बट फिकर नॉट, बाद में आने वाले लोग इंशाल्लाह बोर्ड नहीं होंगे. Absolutely bro, if you are diving into the world of LLMs, you will keep bumping into some keywords like temperature, top P, max tokens, and others. These are all part of the decoding settings which controls how the model generate text. ठीक है, temperature, what it does, controls randomness, range from 0 to 2, usually between 0 and 1. Low value 0.1, more deterministic, safer and repetitive. High value 1 or more creative, chaotic and unpredictable. Analogy, think of it like a spice level. Low is equal to plain, high is equal to wild flavors. Okay, so क्या हमें ज़्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए? We should probably look into it, है ना? जब तक हम खुद नहीं करेंगे इसको, LLMs के रिजल्ट हमें अगर खुद नहीं मिलेंगे तो हम कैसे देखेंगे? बट फिकर नॉट, वी हैव आवर ओन LLM इन आवर ओन हाउस. लोकली हमने एक LLM इंस्टॉल कर लिया था पिछली बार, एंड वी हैव 2 वर्जन्स ऑफ दैट. एंड मेरे पास लाइट LLM है. लाइट से मेरा मतलब है कि हैवी नहीं है, वो लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा इस टाइम में. ओके, टॉप पी aka nucleus sampling. What it does, controls how many possible words options the word option the model samples from, 0 to 1. Top is 0 to 9, 0.9. Model looks at the top 90% most likely words and picks randomly from them. Okay, top p, lower top p is equal to more focused, safer output. Higher top p, more diverse, creative output. Okay, often used with temperature. Rules of thumb, use either top P or temperature to tune randomness, not both aggressively at once. Okay, तो दोनों को aggressively एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका LLM पागल हो जाएगा. यानी दोनों हमारे तरह, यानी एक स्पाइस है तो एक सॉल्ट है, स्वाद अनुसार डालें बस. Max tokens, what it does, limit how long the response will be.
ये अच्छा है. So we should keep the response concise. Sometimes हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी ज़्यादा बातें ना करे. So हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को शॉर्ट रखते हैं. मैक्स टोकन्स. Each word or symbol is equal to one token. Roughly 4 words या इस तरह से. Hello world is equal to 3 tokens. Set this to prevent long or infinite outputs. ठीक है, infinite outputs भी होंगे. एक बार तो मुझे लगा था वैसे होगा, जब डीप सीक कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया था. तकरीबन 6 मिनट सोच रहा था वो, और वो भी एक सिंपल से क्वेश्चन पे. मैंने उससे ह्यू का पूछा था, कुछ कोड दिया था ह्यू को सेट करने के लिए. इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग कोड भाई. व्हाट इट डज, डिस्करेजेस रिपीटेटिव सेम वर्ड्स. ओके, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी. रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स को इग्नोर करता है. रेंज -2 से लेकर 2 तक होती है. हायर वैल्यू लेस लाइकली टू रिपीट द सेम फ्रेज ओवर एंड ओवर. ओके, सो ये एक फ्रेज को दोबारा से रिपीट नहीं करेगा. मैं तो यही चाहूँगा कि हाई हो. प्रेजेंस पेनल्टी. What it does, encourages the model to talk about new things. अरे वाह. Higher value, more likely to introduce new topics or ideas. ये तो मैं full रखूँगा. Stop sequence. Stop sequences. What it does, tells the model to stop generating once it hits certain text. For example, if stop is equal to human or AI, model will stop when it reaches those. Log props. What it does, returns the likelihood of each generated token, useful for debugging AI agents or advanced control. ये समझ नहीं आया मुझे. Response time versus sampling strategy. Greedy decoding always picks the most likely next word. Fast but boring. Beam search explores multiple options before choosing. Slower but better. Okay, slower but better. Sampling with temperature/top P adds randomness. Most natural but less consistent. Sorry, more natural but less consistent. Okay, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया मेरे लिए यहाँ पे. मेरी ज़ुबान बहुत लड़खड़ा रही है. और यहाँ पर quick default combo used in ChatGPT. Okay, 0.7, top P1, frequency penalty 0, presence penalty 0, max tokens itne. Let me know if you want a visual chart, real time examples, or how to tweak for storytelling, coding, or chatbots. Explain this and tell me different settings of different chat, uh, different LLMs. For example, setting of a coding LLM, storyteller LLM, and what the other one should be. Creative ideas LLM. Okay, I guess this is quite it. What is log prop? Log prop probabilities. Log probabilities, okay. This is a debugging or analysis tool that tells you how confident the model is about each word it generates. Oh, अच्छा मैं समझ गया.
हाउ डज इट रिटर्न, ओ सॉरी व्हाट डज इट रिटर्न। भाई मुझे नींद आ रही है शायद। ओके मैं थोड़ा सा सीधे बैठ जाता हूँ ताकि मैं लाइव स्ट्रीम पे ना सो जाऊँ। For every generated token, it gives you the token itself, word or symbol. It log probability, how likely the model think it is, and optionally the top n alternative tokens and their probabilities. अब ये top n क्या होता है? Alternative tokens and their probabilities. Log probabilities are in logarithmic scale. So a token with log prob is equal to 0.1 minus 0.1 is much more likely than one with log prob is equal to minus 3. 0.3 नहीं 3.0. You can convert log probs to actual probabilities using exponentiation probability. Okay, and यहाँ पे use cases for log probs हमारे पास क्या है? Debugging, see what the model almost said. Filtering, avoid low confidence output. Explainability, show why a token was chosen. Fine tuning models, see which outputs are certain or confident. Okay, different settings for different LLM users. Now let's talk about practical tuning. Different tasks need a different level of creativity, safety and structure. Coding LLM goal हो precise, deterministic, no hallucination. हाँ हम ये नहीं चाहते भाई कोडिंग में। recommended settings इसके लिए क्या है? very low randomness, ठीक है 0.0 to 0.2, top piece का 1 होगा, let it pick from full range, doesn't matter here, okay, और frequency penalty 0 and presence penalty 0, मैक्स टोकन जितने और हायर हम रख सकते हैं, वैसे तो हमें कोडिंग के अंदर हायर ही चाहिए होते हैं, सो वी नीड हायर टोकन्स आउटपुट ताकि ज़्यादा आउटपुट मिले। अगर लंबा कोड हो, डीप सीक बेचारे के अंदर मुझे पता है ज़्यादा है। स्टॉप एट दिस कि जब मार्कडाउन में ये प्रेजेंट करे तो स्टॉप कर देना, ठीक है। जहाँ भी कोड ब्लॉक एंड हो वहाँ पे इसका रिप्लाई भी एंड हो जाए। वाई वी वॉन्ट रिलायबल रिपीटेबल कोड नॉट इमेजिनेशन, यस। सो इसकी ये सेटिंग होगी, हम लोग अगर ऊपर जाएं, मैं थोड़ा सा भूल भूल जाता हूँ। सो टॉप पे क्या है? न्यूक्लियस सैम्पलिंग, व्हाट इट डज, कंट्रोल हाउ मेनी पॉसिबल वर्ड ऑप्शन द मॉडल सैम्पल फ्रॉम, ठीक है। 0 to 1, 90% most likely words are picked randomly for them, okay. So 1 0 to 1 की रेंज में होता है, and more focus, safer output, more diverse, creative output, ठीक है। तो इसको हमने हाई ही रखा हुआ है, and let's see temperature controls randomness, more deterministic, safer and repetitive, more creative, chaotic and unpredictable, so we don't want unpredictability, ठीक है। और यहाँ पे frequency discourages repetition of the same words, okay। तो frequency -2 to 2 है हमारे पास, presence penalty है, encourages the model to talk about new things, ठीक है। introduce new topics or ideas, और frequency penalty, ठीक है।
सेकेंडली स्टोरी टेलिंग LLM, ChatGPT 4, क्लाउड etc। ये वाला कौन सा है? को पायलट, कोड लामा, GPT कोड, इसके अंदर ये यूज़ हो रहा है। और क्लाउड GPT 4 बैलेंस क्रिएटिविटी एंड कोहेरेंस, टेम्परेचर 0.7 to 1, मोर क्रिएटिव, टॉप P 0.9, न्यूक्लियस सैम्पलिंग, रिड्यूस रिपीटिशन के लिए 0.3, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी है, प्रेजेंस पेनल्टी 0.6 है, इनकरेजेस न्यू आइडियाज़। और मैक्स टोकन्स 3000 प्लस, क्योंकि लंबी स्टोरी होने वाली है। और स्टॉप कहाँ पे करना है? दी एंड पे। ओके, सो आई गेस कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। अगर प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो हमें आइडिया होता रहेगा कि व्हाट kind of configuration do we need for the LLM to provide certain kind of expected answer. Stories need flow and unpredictability but still need structure. Okay, मैं तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को फुल बढ़ा दूंगा, क्योंकि चैट जीपीटी की स्टोरीज बहुत बेकार होती है। अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए थोड़ी सी। क्रिएटिव आइडिया जनरेटर फॉर ब्रांडिंग, स्टार्टअप नेम, यूट्यूब आइडियाज़, मैक्सिमम इमेजिनेशन एंड सरप्राइज। ओके, टेम्परेचर जो है वो फुल हाई, रैंडमनेस top P 0.85, keep it diverse, and frequency penalty 0.2। ओके, रिपीटेटिव वर्ड्स हमारे पास कम चाह रहा है। और प्रेजेंस पेनल्टी 0.8, फोर्स न्यू टॉपिक जनरेशन। मैक्स टोकन्स 512 GB टू 1000 GB। हाँ हाँ, ओके, 512 टू 1000 टोकन्स हमें जनरेट करके देगा। कम टोकन्स, क्योंकि न्यू आइडियाज़ हैं। अगर बहुत ज़्यादा टोकन्स हो गए तो फिर उसको बहुत सोचना पड़ेगा बेचारे को। We want wild ideas, not the most likely, but the most interesting. Okay, TLDR. So use cases, कोडिंग के लिए ये सेटिंग्स हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए ये, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए ये। Want to experiment? You can tweak these settings using playgrounds like OpenAI Playground और Hugging Face interface, Olama। लेकिन इसने जेमिनाई का नहीं बताया, क्योंकि इसको जेमिनाई से चिढ़ है। ये आजकल क्या बोलता है, जेमिनाई जो है वो डम्ब है, तो बिल्कुल सामने बोलता है बगैर किसी फिल्टर के। मुझे तो ये ओपन एआई वालों की साजिश लगती है भाई। उन्होंने इसकी वो बढ़ा दी है, टेम्परेचर बढ़ा दी है। लेट मी नो इफ यू वांट टू हैव रेडीमेड कोड स्निपेट्स। नो, ओके। सो हमारे पास लोकली LLMs रन कर सकते हैं, उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। ओके, शुक्र है, मुझे लगा मैंने कोई वीडियो खोल के छोड़ दी है और आवाज़ डबल हो गई होगी। द स्पाइक। नाउ from agents, import agents, model settings, function tools, and function tool get weather, city, और उसके अंदर हमारी सिटी का नाम लिखेंगे हम। the weather in this city is sunny, जो भी हमारी सिटी होगी वो पास हो रही है यहाँ पे। नेम हेकू एजेंट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन हेकू फॉर्म, O3 लामा, सॉरी O3 मिनी डाल दिए इसके अंदर। टूल्स इसका गेट वेदर है। ओके, सिंपल एजेंट है। कॉन्टेक्स्ट, agents are generic on their context type. Context is a dependency injection tool. It's an object you create and pass to runner.run. That is passed to every agent, tool, handoff, etc. And it serves as a grab bag of dependencies and state for the agent run. You can provide any Python object as a context. Okay, interesting. Data class का हमारे पास डेकोरेटर है। इट इज़ डेकोरेटिंग क्लास यूज़र कॉन्टेक्स्ट। UID इज़ प्रो यूज़र बुलियन। और फिर हमारे पास क्या है, एक एसिंग मेथड है इसके अंदर। सो डेफिनेशन फेच परचेसेस,
लिस्ट रिटर्न करेगा ये हमारे पास, लिस्ट ऑफ परचेज। ओके, ये कहाँ से आया? रिटर्न समथिंग एंड एजेंट के अंदर फिर हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्या कर दिया, पास कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन पास कर दिया। आउटपुट टाइप्स, बाय डिफ़ॉल्ट एजेंट्स प्रोड्यूस प्लेन टेक्स्ट string outputs. If you want the agent to produce a particular type of output, you can use the output type parameter. A common choice is to use Pydantic objects, but we support any type that can be wrapped in a Pydantic type adapter data classes, list and type dictionaries. What is type adapter, bhai? Base is generic T, type adapter. Type adapter provide a flexible way to perform validation and serialization based on a Python type. Okay. A type adapter instance exposes some of the functionality from base model instance method for types that do not have such methods, such as data classes, primitive types, and more. Note, type adapter instances are not types and cannot be used as type annotation for fields. ओके, तो ये यूज़ नहीं हो सकते एज अ टाइप्स, ये टाइप नहीं है। ये क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी एक्सपोज करते हैं बेस मॉडल इंस्टेंस मेथड से फॉर टाइप्स दैट डू नॉट हैव सच मेथड्स। ठीक है, उन टाइप्स के लिए जिनके अंदर वो मेथड नहीं है। सो या टाइप अडॉप्टर इंस्टेंसेस आर नॉट टाइप्स। ठीक है, ये खुद एक इंस्टेंस है और ये टाइप नहीं होती। अच्छा, पैरामीटर्स टाइप एनी द टाइप एसोसिएटेड विद टाइप अडॉप्टर configuration dictionary for the type adapter should be a dictionary conforming to config dictionary. Okay, you cannot provide a configuration when instantiating a type adapter if the type you are using has its own config that cannot be overridden. बेस मॉडल है हमारे पास, एग्जांपल टाइप डिक्शनरी है एंड डेटा क्लास है। A type adapter dash config unused error will be raised in this case. ओके, कुछ समझ तो नहीं आया लेकिन पढ़ के अच्छा लगा। यही बोल रहा है कि जब आप इसको इंस्टेंशिएट करें तो इसकी यूजिंग हैज इट्स ओन कॉन्फ़िग, अगर ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो कि ओवरराइड नहीं हो सकती, तो ये एरर आएगा आपके पास। क्या ओवरराइड नहीं हो सकता? बेस मॉडल टाइप डिक्शनरी एंड डेटा क्लास। ओके, इसमें ज़्यादा नहीं जाते, बाहर रहते हैं भाई। फ्रॉम पायडेंटिक बेस मॉडल इंपोर्ट करो, बेस मॉडल फ्रॉम एजेंट्स, import agents, class calendar event, base model name, date, participant, list string एंड एजेंट इज इक्वल टू एजेंट, और इसके अंदर हमारे पास नेम इसका कैलेंडर एक्सट्रैक्टर आ गया, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस इसके क्या आगे, एक्सट्रैक्ट करो क्या, कैलेंडर इवेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट से कैलेंडर इवेंट्स निकालेगा और इसका जो आउटपुट टाइप होगा वो हमारे पास ये होगा। ओके, व्हेन यू पास एन आउटपुट टाइप
that tells the model to use structured output instead of regular plain text responses. ठीक है. Handoffs. Handoffs are sub agents that the agent can delegate to. You provide a list of handoffs and the agent can choose to delegate to them if relevant. This is a powerful pattern that allows orchestrating modular specialized agent that excels at single task. Read more in the handoff documentation. From agent, import agent, booking agent ये, refund agent ये, try agent ये है, or help the user with their questions if the user is booking, handoff to booking agent if they are asking for refund, just hand off to refund agent, and then क्या कर दो, handoffs is equal to ये दोनों define कर दो dynamic instructions. In most cases you can provide instructions when you create In most cases, you can provide instructions when you create the agent. However, you can also provide dynamic instruction via function. The function will receive the agent and context and must return the prompt. Both regular and async functions are accepted. Okay, dynamic instructions आपके पास क्या है, context है, run context wrapper है, उसके अंदर user context पास हुआ है. ये syntax मुझे सीखना है. Agent और एजेंट के अंदर यूजर कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया है अगेन. ओके. और रिटर्निंग क्या कर रहा है वो, द यूजर नेम इज context.context.name. हेल्प देम विद देयर क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे agent user context and name is equal to try agent, instructions is equal to dynamic instructions. Okay. Dynamic instructions via functions. ठीक है. ये कोड मुझे समझना है. लाइफ साइकिल इवेंट्स है हमारे पास. ओके. Sometimes you want to observe the lifestyle of an agent. For example, you may want to log events or prefetch data when certain events occur. You can hook into agent life cycles with the hooks property subclass the agent hooks class and override the methods you are interested in. ठीक है. Guardrails allows you to run check slash validations on user inputs in parallel. The agent running, for example,
You could screen the user's input for relevance. ठीक है, guardrail भी हमें पता है. Cloning, copying agents. By using the clone method on an agent, you can duplicate an agent and optionally change the properties you like. Any property you like. Okay, seems interesting. Pirate agent is equal to agent. Pirate है instruction है write like a pirate. और फिर robot agent है write like a robot. Okay. So ये क्या कर रहा है? Robot agent is equal to pirate agent dot clone. उसको क्लोन कर लिया इसने. जैसे हम क्लासेस हैं तो इसको इनहेरिट कर लिया. हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, शायद देखते हैं. बट यहाँ पे तो यही कर रहा है. और फिर इसको नाम और इंस्ट्रक्शंस दे दिए राइट लाइक अ रोबोट, यानी टोटली डिफरेंट. लेकिन इसके अंदर मॉडल डिफाइन नहीं किया. मॉडल यहाँ पे डिफाइन हो गया. फोर्सिंग टूल यूज. सप्लाई Supplying a list of tools doesn't always mean the LLM will use a tool. You can force tool use by setting model setting dot tool choice. Valid values are auto, which allows the LLM to decide whether or not to use a tool. Required, which requires the LLM to use a tool, but it can intelligently decide which tool. Okay. None, which requires the LLM to not use a tool. Setting a specific string, my tool, which requires the LLM to use that specific tool. To prevent infinite loops, the framework automatically resets tool choices to auto after a tool call. This behavior is configurable via agent.reset tool choice. The infinite loop is because tool results are sent to LLM, which then generates another tool call because of tool choice ad infinitum. पता नहीं क्या बोले. If you want the agent to completely stop after a tool call, rather than continuing with auto mode, you can set agent.tool use behavior is equal to stop on first tool. ठीक है? Which will directly use the tool output as final response without further LLM processing. Okay. तो अब मुझे समझ आया कि कर्सर जो है जब वो हमारे पास कोड लिखता है देन ही इज कॉलिंग टूल्स. और कभी कभार क्या होता है कि वो टूल कॉल कर रहा होता है और बेचारा जो है काफ़ी टाइम ले लेता है. देन सेट उसके अंदर एक टाइम आउट रखा हुआ है उन्होंने स्पेसिफिक ट्राइज के बाद या कुछ टाइम होता है वो मैक्स टूल कॉल की वो आ जाती है. एक क्या होता है उसके अंदर 25 मेरे ख्याल से वो एजेंट कॉल्स होते हैं या टूल कॉल्स. लेकिन इस तरह से कुछ आता है उसके अंदर टाइम आउट हो जाता है टूल कॉल का. सो आई गेस दैट इज़ ऑल्सो टू प्रिवेंट इट सेल्फ फ्रॉम गोइंग इन टू एन इन्फाइनेट लूप. सो वो दोनों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैच कर पा रहे हैं. ओके, आई गेस ये ख़त्म हो गया. और हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे बट कुछ न्यू चीज़ें भी आई इसमें. You can run agents via runner class. You have three options: runner.run, runner.runsync, runner.run streamed. Okay, which runner.run, which runs a sync and returns run result. Okay, इसको भी देखते हैं. Okay, बाद में, अभी नहीं, अभी फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं. Okay, runner.runsync, which is a sync method and just runs .run under the hood. तो रनर डॉट रन जो है वो एसिंक है, एसिंक्रोनस है, और वो रिटर्न करता है रन रिजल्ट्स को. ये डेटा क्लास लिखी हुई है.
और रनर डॉट रन सिंक जो है ये हमारे पास सिंक मेथड है जो कि सिर्फ रन को रन करती है अंडर द हुड. Runner dot run streamed, which returns is synchronous and returns a run result streaming. ये भी डेटा क्लास है. It calls the LLM in streaming mode and stream those events to you as they are received. Okay, स्ट्रीमिंग जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट डेज के अंदर, सो दैट वाज कि जैसा डेटा आ रहा है वो रिजॉल्व होता जा रहा है ऑन द स्पॉट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द वोल थिंग टू कम. वो जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है उसको रिजॉल्व करता है, करते 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 आपको शो कर रहा है. सो दैट स्ट्रीमिंग. ओके, लाइव. अच्छा, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर. और हमारे पास सिंक डेफिनेशन मेन एजेंट इज इक्वल टू एजेंट नेम असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट. रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रनर डॉट रन एजेंट. राइट ही को अबाउट रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग. ये हेकू क्या होता है यार, मैं पहले हेकू देख लूँ. A haiku is a super short Japanese poem, but it's got rules. It's not just a short sentence. Acha. Structure of a haiku. It has three lines with a specific syllable pattern. Acha. Line 1, 5 syllables. Line 2, 7 syllables. Line 3, 5 syllables. Example. Code flows like water. Errors break the silent night. Fix it, then deploy. Okay, that doesn't match anything. Key features. Usually about nature, season, or deep emotions. Simple language, but layer of meanings. No rhyme required. Okay, that's bad. Pauses and mood shifts are common. It's poetic minimalism. Western haikus versus traditional haikus. Traditional Japanese haikus often mention season, kigo, and have a pause. Kireiji. English haikus usually just follows the 575 rule without deep culture elements. हाँ, obvious है. Culture matters, भाई, culture matters. Why care? It's great for practicing creativity under constraints. Training AI on poetic form. ये कहाँ से आ गया? और social media, short plus punchy, relaxing your overclocked coder brain. Wanna write a few haikus together on coding AI? I'm game. हाँ मुझे पता है भाई, तुम्हें लिखने का बड़ा शौक है लेकिन मुझे नहीं है. अच्छा, राइट अ haiku about recursion in programming. ओके, तो इसने लिखा हुआ है कोड विद इन द कोड. और क्या ये functions calling themselves, infinite loop stance. ओके, वैसे ये 575 रूल क्या था? syllables. No, it's not characters, it's syllables. So what does syllable mean? A syllable is a single sound unit in a word. Okay, single sound unit in a word. You can clap it out like code 1 syllable, deploy 2 syllable, internet 3 syllable. Oh,
सो डिप्लॉयमेंट, ये कितने सिलेबल हो जाएंगे? डिप्लॉयमेंट 3 सिलेबल हो जाएंगे ये। ओके। हेइकू, ये 2 सिलेबल हो गया। स्ट्रक्चर, ये 2 सिलेबल हो गया। सो टोटल 17 syllables in 3 lines. Count the syllables. Bright screen in the dark. 1 2 3 4 5, 5 syllable हो गए। Fingers tapping lines of code. 1 2 3 4 5। Fingers tapping. Okay, tapping. So these are 7 syllables. ठीक है। The bug stares back hard. 1 2 3 4 5, 5 syllable. Okay, I was right. Common mistakes. A lot of people confuse characters, letters with syllables, but internet 8 characters, but 3 syllables. Haiku is about spoken rhythm, not written length. Okay, मैं समझ गया। चलो भाई, आज हमने हेकू भी सीख लिया। 757 rule and it follows culture in the Japanese way. A season, kaigiri, and kaigi, पता नहीं kaigiri, and इंग्लिश वाले में सिर्फ 757 रूल होता है, इसमें सिलेबल होते हैं। सही है। सो इट फॉलोज लाइक 5 syllables, 7 syllables एंड 5 syllables, 3 lines होते हैं। सो 1 syllable is not a word, but it is rather the rhythm of the word. इंटरनेट 3 syllable है ये हमारे पास। यानी पिकाचू, पिका और चू, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2 syllable हो गया। ओके, मेरे जहन में पिकाचू क्यों आया, आई डोंट नो, बस आ गया। ओके, so the agent loop. When you use the run method in runner, you pass in a string, you pass in a starting agent and input. ठीक है, हम एक agent पास करते हैं, एक input पास करते हैं। The input can either be a string which is considered as a user message or a list of input types which are the items in the OpenAI responses API. Okay. So बहुत सारे input items भी पास कर सकते हैं, which are the items in the OpenAI responses API. The runner then runs the loop. Runner loop run करता है। ठीक है, याद रखेंगे हम। We call the LLM for the current agent with the current input. The LLM produces its output. If the LLM returns a final output, the loop ends and we return to result. If the LLM does a handoff, we update the current agent and input and rerun the loop. ठीक है। If the LLM produces tool call, we run those tool calls, append the results and rerun the loop. ठीक है। If we exceed the max turns passed, we raise a max turn exceed exception. ये रहा max turns। मेरे ख्याल से यही एरर आता है मैक्स टर्न्स वाला उसमें। क्या नाम है इसका कर्सर में? The rule of whether the LLM output is considered as a final output is that it produces text output with the desired type and there are no tool calls. Okay, streaming allows you to additionally receive streaming events as the LLM runs. Once the streaming is done, the run result streaming will contain the complete information about the run, including all the new outputs
produces, you can call dot stream events for the streaming events. Read more in the streaming guide. Hmm. मैं थोड़ा सा साइलेंट मोड में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है ये थोड़ा सा क्या है पढ़ना है। oh, या मैं साइलेंट नहीं रह सकता. Run config, the run config parameter lets you configure some global setting for the agent. Run model allows setting a global LLM model to use irrespective of what model each agent has. Model provider, अच्छा, model provider for looking up model names which defaults to OpenAI. मॉडल सेटिंग्स के अंदर हम लोग जो है टेम्परेचर और टॉपी वगैरह और जो हमने अभी पढ़ा वो सब सेट कर सकते हैं. सो दैट्स गुड. एजेंट स्पेसिफिक सेटिंग्स को ओवरराइड करता है और मॉडल प्रोवाइडर फॉर लुकिंग अप मॉडल नेम्स which defaults to OpenAI. Input guardrails, output guardrails, a list of input or output guardrails to include on all runs. Handoff input filter, a global input filter to apply to all handoffs. If the handoff doesn't already have one, the input filters allows you to edit the input that are sent to new agents. See the documentation in handoff.input filter for more details.
ट्रेसिंग क्या होती है देखते हैं. The agent SDKs include built-in tracing, collecting a comprehensive record of events during the agent run, LLM generations, tool calls, handoff guardrails, and even custom events that occur using the traces dashboard. You can debug, visualize, and monitor your workflows during development and in production. Tracing is enabled by default. There are two ways to disable tracing. You can globally disable tracing by setting the environment variable OpenAI agent disable tracing is equal to 1, and second, you can disable tracing for a single run by setting agent.run config tracing disabled to true. For organizations operating under a zero data retention policy, OpenAI tracing is unavailable. OpenAI API's tracing is unavailable. Okay, trace and spans present a single end-to-end creation of a workflow. They are composed of spans, trace and following properties, workflow name, trace ID, group ID, disable metadata. Okay. Trace includes sensitive data, configures whether trace will include potentially sensitive data such as LLM and tool call input outputs, workflow name, trace ID, group ID, set the tracing workflow name, trace ID and trace group ID for the run. We recommend at least setting workflow name. The group ID is an optional field that lets you link traces across multiple runs. Trace metadata to include on all traces. Conversations slash chat threads. Calling any of the run method can result in one or more agent running and hence one or more LLM calls, but it represents a single logical turn in a chat conversation. For example, user turn, user intertext, runner run, first agent call LLM, then tool run does a handoff to a second agent runs more tools and then produces an output. At the end of the agent run, you can choose what to show to the user. For example, you might show the user every new item generated by the agent or just the final output. Either way, the user might then ask a follow-up question, in which case you can call the run method again. You can use the base run result base to input list method to get the input for the next turn. Okay, assistant reply concisely with trace workflow name is equal to conversation, group ID is equal to thread ID, first turn result is equal to await runner dot run agent. What city is the golden gate in? मेरे ख्याल से उस सिटी का नाम है सैन फ्रांसिस्को. हाँ.
Second turn. New input is equal to result dot to input list plus role user content what state is it in. ओके ये मुश्किल हो गया. कौन सी स्टेट में है सैन फ्रांसिस्को? क्या ये न्यू जर्सी में है? नहीं, न्यू जर्सी क्या स्टेट है? टेक्सास? मुझे नहीं पता. कैलिफोर्निया. ओके, कैलिफोर्निया सबसे नीचे है भाई. Role user content what state is in it. Result is equal to await runner dot run agent new input. Result dot to input list. ओके तो यूज़र ने एक क्वेश्चन किया, फिर उसने दूसरा किया, तो दूसरे वाले को हमने उठा के रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट के अंदर डाल दिया, प्लस एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमारे पास यूज़र का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, एंड देन दैट क्वेश्चन वेंट इनटू दिस एंड इसने कुछ आउटपुट रिटर्न किया होगा और ये हमने पास कर दिया इसके अंदर फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए. ओके तो हमारे पास ये एक बार तो नहीं होगा, काफ़ी बार यूज़र फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकता है एजेंट से. न्यू इनपुट result dot to input list. Okay, let's see exceptions. Conversation slash chat threads. Calling any of the run methods can result in one or more agent running and hence one or more LLM calls, but it presents a single logical turn in conversation. For example, user enter a text, runner.run first LLM calls and then run tools and gives the final output. At the end of the agent, you can choose what to show to the user. For example, you might show the user every new item generated by the agent or just the final output. Either way, the user might ask a follow-up question, in which case you can call the run method again. You can use the base run result based dot to input list method to get the input for the next turn. ठीक है. Exceptions. The SDK raises exception in certain cases. The full list in this is in agent.exceptions. Okay. Exceptions देख लेते हैं. Exceptions लाजमी है. As an overview, agent exception is the base class for all exceptions raised in the SDK. Max turns exceeded is raised when the run exceeds the max turns passed to the run method. Model behavior error is raised when the model produces invalid output. Malform JSON or using non-existent tools. Hallucination simply. User error is raised when the person writing the code using the SDK makes an error using the SDK. Okay,
हमारे लिए भी एरर बनाया है। इनपुट guardrail tripwire triggered, output guardrail tripwire triggered is raised when a guardrail is tripped. ओके, ये तो कॉमनली हमने यूज़ कर लिया। और ये बेस क्लास है एजेंट एक्सेप्शन मैक्स रन एक्सीड इज रेज व्हेन द रन एक्सीड्स द मैक्स रन पास टू द रन मेथड। और मॉडल बिहेवियर जब इनवैलिड जेसन वगैरह क्रिएट करता है। और यूज़र एरर जब हम इस डीके को राइट करने में कोई गलती करते हैं। ठीक है, सो आई गेस वी शुड ट्राई दिस वन एटलीस्ट। और ये जो है रन सिंक और रन स्ट्रीम्ड, इसको हम देखते हैं, तीनों पे प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक्सेप्शंस पे तो प्रैक्टिस चलती ही रहती है। अच्छा, इसके सोर्स कोड बताए गए हैं जो हमने रिपॉजिटरी क्लोन की है। सो src एजेंट स्लैश एक्सेप्शंस के अंदर हमें मिल जाएगा मैक्स टर्न्स का कोड वगैरह वो सारा। और मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है उस कोड को देखने के लिए। ओके, it's been an hour since we start studying, sorry, and I am already very bored actually. So I guess एक इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं हम कि ये खोल लेते हैं। एटलीस्ट बोर तो नहीं होंगे हम। देखते हैं कि ओपन एआई एजेंट एसडीके कैसे लिखा गया है। ओके, मॉडल्स एमसीपी ट्रेसिंग, बड़ा ही क्लीन कोड है इसका। ये एक्सटेंशंस हैं, ये वॉइस है, ये बाकी का कोड है, और ये इसके टेस्ट्स हैं। एक टेस्ट देख लेते हैं। पाई टेस्ट के जरिए से टेस्ट कर रहे हैं इसको। और नम पाई है।
ओके, प्रोडक्शन लेवल कोड काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, सिंपल सिंपल। आई डेंट एक्सपेक्टेड इट लुक लाइक दिस। ओके, हम कहाँ थे? तो आ जाते हैं एक्सटेंशंस। यहाँ पे तो हमारे पास एक्सेप्शंस है नहीं। मॉडल्स में आ जाते हैं। एक्सेप्शंस डॉट पाई तो यही पे लिखा हुआ है। लेट्स सी, एक्सेप्शंस डॉट पाई। ये इस बंदे ने लास्ट मंथ इसको लिखा है। रोहन मेहता एंड अदर्स। आई कैन सी द इश्यूज। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे ये देखने में, कैसे हर एक पार्ट एक एक डेवलपर ने लिखा हुआ है। हम आपस में भी यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं अभी रिसेंटली, लेकिन ऐसे मैंने प्रोडक्शन का कोड अभी देखा है। ये वाली एक्सेप्शन रेज होती है, मैक्स टर्न एक्सीडेड एजेंट एक्सेप्शन। वेल, आप लोग इस कोड के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप लोगों को है शौक। सो यू आर वेरी वेलकम। और गिटहब इश्यूज क्रिएट करके इनको बता सकते हैं कि यहाँ पे इश्यूज है और मैंने रिजॉल्व कर दिया। सो पुल रिक्वेस्ट भी बना के दे सकते हैं। सो या दैट्स इजी। होप इट विल बी एक्सेप्टेड। ओके।
ओके। सो मुझे इसको क्या बताना है? मुझे इसको बताना है कि मुझे रनर के बारे में बताओ। ओके। और क्या था? स्ट्रीम था, लेकिन स्ट्रीम क्या था? रन स्ट्रीम्ड। ओके। ओके, पढ़ लेते हैं। रनर डॉट रन एजेंट इनपुट है, रन रिजल्ट रिटर्न करता है, एसिंक है। यूज व्हेन रनिंग एजेंट इन asynchronous context and you just need the final output। ओके। सिंक है, रन रिजल्ट रिटर्न करता है, कन्वीनियंस मेथड फॉर synchronous code blocks until done, wraps run।
I guess I should continue after some time. ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एक जेनेरिक टाइप पास हो रही है इसके अंदर, और डेटा क्लास का अ कन्वीनियंट वे टू डिक्लेयर क्लासेस मेनली यूज फॉर स्टोरिंग structured data. It automatically create common method like init. Where did it come from? Base in agent class generic. ठीक है, चलो, we will continue at I guess later on whenever we do, but we will